Hello everyone, welcome to PTE Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. And this is 46th video in this series. It means that we have already discussed 45 highly repetitive real exam questions जो students को उनके पेपर में भी आए हैं, right? And we have discussed the strategies also how to solve them. So let's get started. First things first, now you can apply in UK through PTE, and 90% of Canadian universities now accept PTE Academic, and PTE Home is a new test which has started for family visa in the UK. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now the question students ask is sir क्या हम भी ऐसे ही target achieve कर सकते हैं अपना? The answer is big yes. And in your next attempt, चाहे वो आपकी first attempt हो, अगर आपने पहले prepare नहीं किया है, in your next attempt you are going to score your target. So that's why do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. So PT reading is of 32 to 41 minutes and it is not scored out of 90. Now you would know अगर आप एक regular follow कर रहे हैं हमारे videos को that it is scored out of 47 marks and it has 5 question types, and reading filling the blanks is your second last question in this series. And this is the real PT scoring where you can see the reading module is just contributing 47 marks and उसमें से 15 marks are for your reading filling the blanks. So if you are getting 5 RFIBs, they will be of 3 marks each. So that's why they are very important. Now what is our strategy? For solving reading filling the blanks, you have 2 to 2.5 minutes to solve. अब ये time कैसे हमें पता चला? It's based on our big data analysis as well as artificial intelligence analysis. बट अब इसमें स्टूडेंट एक मिस्टेक क्या करते हैं, दे ट्राई टू रीड ऑल द वर्ड्स, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. इज इट द राइट स्ट्रैटेजी? द आंसर इज नो. What you have to do is you have to do the skimming, and we teach our students who take coaching from us in institute or online how to do the skimming. And this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this and then we are going to get started. Okay, so you know that the first thing we do is we do skimming to understand the tone, gist as well as tenses. So tone में positive tone है, negative tone है, neutral tone है. Gist tells you the overall idea or theme, and tenses past tense है, present tense है या future tense है. And after that we do parts of speech classification for these options. Okay, and always remember reading filling the blanks में जितने भी options होंगे you are going to get plus 3 blanks more. So there will be just 3 more blanks जो total options में आपको मिलेंगे. So over here let's get started with the skimming. Pop stars have all recorded music at world famous Metropolis Studios. Last year the recording studios something compiling an album which features songs from relatively unknown musicians. First year student decided to submit his song demo to be included in the volume 2 of the Lost Solve which was released this year. Something he saw how successful volume 1 had been. Zach said I found this competition when simply something the internet for songwriting competitions one day and was lucky that there was still dash to enter. It amazes me that people who have worked with huge pop stars thought my song was something and worth something. Okay. So over here यहाँ पे कोई म्यूजिशियन की बात हो रही है और उसने अपना सॉन्ग दिया राइट, और उसके बारे में वो अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, now you would have seen I have put stars over here. Why I have put? Because these are some grammar rules which I want you to learn. The first one is this: जब भी दो से ज्यादा words act as a single adjective, जैसे world famous, तो यहाँ पे metropolis का adjective है world famous, metropolis studios का, so that's why they are using hyphens. The same is applicable over here, song hyphen writing competitions. Okay,
सो यहाँ पे सॉन्ग राइटिंग एडजेक्टिव है कंपटीशंस का, एंड अनदर ग्रामर रूल विच से पहले हमेशा कॉमा आता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो पीटी एकेडमिक अगर आप रीडिंग में देखो, यू कैन लर्न द रूल्स अगर आपको वो रूल्स पता हैं तो. ओके, नाउ इट्स द टाइम फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासिफिकेशन. ओके, सो अब यहाँ पे सेट ऑन क्या है, आपका एक तरह से ये फ्रेजल वर्ब है. ओके, सेट अबाउट भी क्या है, अगेन फ्रेजल वर्ब. ओके, आफ्टर एक तरह से preposition है, राइट, जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं. बिफोर भी preposition है. सर्चिंग, सर्च की वर्ब की ing फॉर्म है. टाइम नाउन है. गुड बैड बोथ आर एडजेक्टिव्स. सो अब आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स भी दिया हुआ है, नाउन भी है, वर्ब भी है और फ्रेजल वर्ब्स भी हैं. फ्रेजल वर्ब्स भी मोर और लेस लाइक अ वर्ब्स होती हैं एंड prepositions दिए हुए हैं. सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ब्लैंक. Last year, the recording studios dash compiling an album. अब यहाँ पे last year था, compiling यूज हो रहा है, राइट. सो हम जनरली कैसे यूज कहते हैं, started compiling. अब compile किया, हुआ, अब स्टार्ट किया उन्होंने या रिकॉर्ड किया, राइट. सो अब उससे रिलेटेड सिनोनिम वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, सेट ऑन है और सेट अबाउट है. वर्ब्स कौन कौन से हैं, सेट ऑन है, सेट अबाउट है, राइट. सर्चिंग, क्या दो आईएनजीज इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते. सो वी आर डूइंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नाउ. व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑल द रॉन्ग ऑप्शंस और जो ऑप्शन बच गए दैट वुड बी आवर बेस्ट आंसर. ओके, सो दिस इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. सो सेट ऑन एंड सेट अबाउट, दीज आर टू वर्ड्स. अब यहाँ पे क्या फिल होगा, सेट ऑन और सेट अबाउट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि एंड दे से सेट ऑन हो सकता है, नहीं. स्टार्ट की फ्रेजल वर्ब है सेट अबाउट. ओके, इनिशिएट करना, इट्स ऑलवेज सेट अबाउट. फ्रेजल वर्ब्स आर लाइक कॉलोकेशंस कि हर वर्ड की preposition के वर्ड्स के साथ डिफरेंस आ जाता है. जैसे सेट ऑन है, सेट अबाउट है, यहाँ पे सेट अबाउट होगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब एक सिंपल सी बात जो स्टूडेंट्स फिर से पूछते हैं कि सर क्या हमें सारे वर्ड्स पढ़ने होते हैं. नो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट रीड 4-5 वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक, 4-5 वर्ड्स after the blank. Okay, so which was released this year, something he saw, how successful volume 1 had been. अब रिलीज हो चुकी है और उसने अपना एक डेमो सॉन्ग दिया. जब उसने देखा कि उसका वॉल्यूम 1 ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है तो उसने वॉल्यूम 2 में अपना डेमो सॉन्ग दिया. तो अब मैंने आंसर भी दे दिया है, क्या होने वाला है यहाँ पे, आफ्टर, राइट. जब उसने देखा, और जब उसने देखा अगर आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे कौन सा वर्ड बेस्ट मैच करता है, इट्स गोइंग टू बी आफ्टर. ओके, सो वी हैव सिलेक्ट आफ्टर ओवर हियर. I found this competition when simply the internet. Simply LYs हैं तो क्या होते हैं, ये adverbs होते हैं, right? Part of grammar which we teach to our students. Grammar course, we have a complete grammar course for our students. The internet, right? Adverb के बाद क्या आएगा, verb आएगी. और आपके पास कितनी verb है, सिर्फ एक ही verb है जो यहाँ पे fit होगा. और वैसे भी हम ऐसे ही कहते हैं surf the internet, search the internet. Okay, so that's why you are going to put the answer as searching. Moving on to the next one. There was still something to enter. क्या होगा, right? Phrase ही है still time to enter. So we are going to select it over here. Still time to enter. Now moving on to the next one. Thought my song was something and worth something. Okay. अब वर्थ समथिंग, समथिंग आप एज अ नाउन लगा सकते हो, राइट. वर्थ उसके एडजेक्टिव है. पैरेललिज्म चल रहा है, एंड है. सो अगर आपने हमारे ग्रामर को अटेंड किया हुआ है, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेललिज्म. सो द आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी एडजेक्टिव. अब कौन सा एडजेक्टिव होगा, गुड होगा या बैड होगा, राइट. अगर उसने वो सबमिट किया और वर्थ है उस चीज की तो आंसर क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी good, right? So we are going to select good. Okay, why? Because the connotation was positive over here. Worth something मतलब उसकी कुछ worth है तो इसीलिए उसका answer is going to be good. Now let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So you see, if you follow our strategy, you will be able to solve reading filling the blanks quickly. What is our strategy? Our strategy is based on context, lexical resource and grammar. In context, we do skimming, forward reading, backward reading, tone analysis,
For lexical resource, we have a list of collocations for our students. Phrasal verbs, you have seen the importance of phrasal verbs. Vocabulary, another important thing. And for grammar, we have a complete grammar course for our students where we teach them parts of speech, जो बहुत important है. You have seen their importance. Subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, and British English rules and sentence formation. So all these things we teach to our students, and this grammar course is going to boost your scores not only in your reading but also in your listening and writing, because you have to write there also. So this is going to help you a lot to achieve your target score, especially if your target score is 79 plus. Always remember, you have 2 to 2.5 minutes to attempt your reading filling the blanks. In first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content. Then in next 90 to 120 seconds, you have to do parts of speech classification, process of elimination, and apply the strategies, the grammar strategies which we teach, okay? And you will be able to solve your reading filling the blank. All the strategies which we teach are validated and proven strategies. You can see the ticker below, the proof of these strategies, because so many students of ours have achieved their target score. So if they have achieved, you can also achieve. And these are some of our success stories where students have scored 90, 87, 86, 82, 81. So if they can score, you can also score. Okay. This is our WhatsApp number 8679121121. So if you have any question or doubt, you can ask her. If you want to take online coaching or in-institute coaching, you can contact us. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.